Okay. In the last session of our topic probability, हमने डिस्कस किया था बच्चे probability of A और B, which is known as PA plus PB minus PA intersection P. ये मेरा क्वेश्चन था, या हम कह लीजिए कि हमने इन क्वेश्चन के साथ डील किया था. दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ और, एंड दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड. चेक कर लीजिए, वन थिंग इज कॉल्ड और दूसरा आपके पास क्या है एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, मैंने आपको ये कहा था कि वट एवर द क्वेश्चन विल कम टू यू, use all the formula designed in your part. One is A, another is B. तो चेक कर लीजिए बच्चे, एक आप बात कर रहे हैं किसकी, A की, ठीक, एंड अनदर सेट इज B. एंड आप अपने लास्ट सेशन में जाके देख सकते हैं कि हाउ वी विल डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. And we have discussed all the formula related to these concepts. So today I'm starting with some question from your book. तो एक चीज देखिए बच्चे, 16.1 exercise है, that is basically a sample space. 16.2 exercise basically deal with events, mutually exhaustive or exclusive events. And now I come to your next exercise, which is 16.3. तो मैं 16.3 एक्सरसाइज को बच्चे डील कर रहा हूं, एंड सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आज मेरी जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं बच्चे, दे आर बेसिकली बिलोंग्स टू एनसीईआरटी, एंड आई एम डीलिंग विद 16.3 एक्सरसाइज. 16.3 एक्सरसाइज में भी मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12. प्लीज चेक इट. इससे पहले वाले क्वेश्चन बड़े इजी हैं, फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी, तो वो आप सबको आते ही. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. 12 में ही सेड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.7, व्हाट इज given to me, probability of this is 0.6, and he is asking me whether this statement is true or false. आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या क्या है, फॉल्स. फिर से चेक कीजिए, ट्रू एंड फॉल्स. False. Very good. Why I'm setting this one as false? देखिए, जो आपका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी, वो ए से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. तो वी कैन सिंपली से कि ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या है, फॉल्स है. ओके, नाउ इफ आई एम डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चे आप देख सकते हैं व्हाट इज गिवन टू यू. तो इसमें आपको गिवन है कि पी ए की वैल्यू 0.5, पी बी की वैल्यू 0.35, और हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 0.7 है, और हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड वी विल डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन अ सिंपल मैनर. चेक कीजिए कैसे. तो वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू
probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. आपका simple सा काम है बच्चे, put up the values. ठीक, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? P इंटर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो मैं बड़े कॉमन से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एंड माय रियल क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। आज के बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आज के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये उनका बेसिक आप समझ लीजिए हम कर रहे हैं। तो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू मी इन क्वेश्चन नंबर, हाँ जी मैं आपका भी रिस्पॉन्स लूंगा। प्लीज ओपन द बुक along with me. PA is equal to 3.5, PB is equal to 1.5, and he is asking me find the value of A union B when A and B are mutually exclusive. Now tell me, what is the definition of mutually exclusive? Any one of you? कि mutually exclusive में हमने क्या किया? आप सभी ओपन है। Sir, P of A intersection B is equal to 5. Yes, very good. That is the definition of mutually exclusive event. PA intersection B is equal to 0. Now, if we utilize our formula, this one, तो बच्चे इसका मतलब PA intersection B की वैल्यू तो क्या चलेगी? 0 चलेगी। तो we will simply find out PA union B is equal to PA plus PB। ये किस चीज की वैल्यू है? A union B। Got my point? So this is the way we will deal with this kind of questions. अभी easy चल रहे हैं बच्चे, अभी देखते जाइए क्या होने वाला है। Come on to question number 50. And Sir, I have a doubt in the previous question. Yes, yes. Is it correct to write P of A intersection B is equal to 0? Probability. हाँ, why not? So nothing is common in A and B, and 0 states some quantity of probability. Is it correct to write it? I have doubts. No. When we deal it with numerical, so in numerical we will definitely write it in 0 form. Otherwise, what you can say about this? When we deal this term numerically, so numerically when nothing is there, we can represent it with 0. Yes, sir. Got it, sir. Okay. Question number 50. He said, अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। PE is equal to 1/4, and we are just utilizing the formula. PF is equal to 1/2, and check my point. PE intersection F, उसने एंड कहा है बच्चे, that is equal to 1/8. फिर से देख लीजिए, PE is this, PF is this, and PE intersection F is 1/8. And what he is asking, find P, E or F. देखिए, very common formula for this. PE union F is known as PE PF minus P intersection F. You know it, na? So just put up the values of PE plus PF minus PE intersection F, you will get the answer. But my next question is very good. And in the next question, he is asking me, find out the probability of P not E and not F.
And if I can represent it numerically, so I will say he is asking me to find out the probability of E naught and F naught. ठीक, in the last sections या sessions we have derived this formula. What is this? तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बात पीछे लेके चलता हूं बच्चे. De Morgan law. So we know that A union B complement is A complement intersection B complement. Okay, so in probability I can simply write it as P A union B complement. और क्योंकि हम यहाँ E और F कर रहे हैं तो P E union F complement. And you know that P E union F complement can be written as 1 minus P E union this is 5/8. So we can find out the probability in this sense. अच्छा, एक चीज और भी सुन लीजिए. When we deal this question, आपको ऐसा भी कहा जा सकता था. Now tell me what we write for this formation. In a very simple notation, we can write this as PE this way. Okay. Probability. When we deal this kind of question. Got it? Okay. Come on to next one. Very good. Okay. अब somebody will say you this one कि अगर आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना हो PE this, बच्चे ये फार्मूला ही होता है, बट आई विल टेल यू विद वेन डायग्राम. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने जा रहा है. चेक इट. इनडायरेक्टली आपने सेट में ये फार्मूला भी किया था कि दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज दिस. तो ये वापस इसी में क्या चला जाएगा, क्वेश्चन में चला जाएगा. Okay, now I come to the next question, which is numerically in this formation. Question number 17 of your NCERT book. आज हम NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे. And he said PA probability of A is 0.45, probability of B is 0.48, probability of A and B is 0.16. Determine A naught. I think आप सारे इसका आंसर बता सकते हैं, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी टू एक्सप्लोर दिस वन. हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम यू? आप सब ओपन हैं, यू कैन आंसर मी. 1 minus 0.42. बस, that's simple. You can simply write it as 1 minus probability of A.
Now in the next question, he is asking me not B. So we can simply say 1 minus PB. And in the third step, he is asking me probability of A union B. I think आपको किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो we will simply move to PA okay, and this is the way we can solve the question. Okay, this is the combination of set based formulas plus probability, totally numerical. ठीक, तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं इनको ले रहा था. एंड अभी हम थोड़े से इसमें डिफिकल्ट करते जाएंगे, बट नाउ आई एम मूविंग टू सम स्टेटमेंट क्वेश्चन. प्लीज अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिएगा साथ में. ओके, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ही सेड इन क्लास 11 न्यूमेरिक स्टेटमेंट टाइप और वर्ड प्रॉब्लम हम जिसको कह सकते हैं, 40% स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स. दैट मीन्स मैथमेटिक्स को स्टडी करने वाले कितने हैं? 40%. एंड 30% स्टडी बायोलॉजी. ओके, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ही सेड 10% ऑफ द क्लास स्टडी, देखिए मैथमेटिक्स एंड वर्ड इज एंड बायोलॉजी. If a student is selected at random in the class, find the probability that he will study mathematics or biology. I think इससे easy question नहीं हो सकता. And you know it, what is going to be here? Just convert it into the form of probability. Probability of mathematics 40 by 10. Probability of biology is 30 by 100. Sorry, मैं 10 बोल गया था. And probability of mathematics and biology is 10 by 100. And I think फिर आपको लगेगा कि it's quite easy. We want to find out M this. तो ये क्या होगा? PM PB minus this. है ना easy? अगर परसेंटेज की बात आएगी तो इट्स 60%. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी तो ये कितना आना चाहिए? 0.6. 0.6. ओके, तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि दिस इज आल्सो क्वाइट इजी, बट एनी हाउ अभी बिगिनिंग हो रही है. एंड हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. एनसीईआरटी बेस्ड. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examination, the probability of randomly chosen student passing the first examination. देखिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम को पास कर रहा है तो its probability is 0.8. And the probability that the second examination, if he is passing the second examination, the probability is 0.7. अब क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, the probability of passing at least one. Okay, is given to me 0.95. ओके, तो बच्चे आप सबको पता है व्हाट डू वी मीन बाय एटलीस्ट. अब इफ यू आर डीलिंग इन अ वेन डायग्राम तो एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चे आइदर 1 और 2, और आई कैन सिंपली से दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यूनियन 2, 0.95. एंड व्हाट ही इज आस्किंग मी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ. तो पासिंग बोथ वाला मतलब आपसे किस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहा है? 1 इंटरसेक्शन 2.
And I think आप सब जानते हैं how we will move to the next one. आप इनको you will give the name, probability of first, probability of second and probability of third. जैसा भी आपको ठीक लगे तो give the name, put the values here and you will get the values. I think this is also quite easy as far as 11th class probability is concerned. Okay, now come on to next one. देखिए, what is the probability that student will pass the final examination in both, देखिए वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, the probability that a student either pass English और हिंदी. अच्छा, अब क्वेश्चन आया बच्चे, the probability of passing neither हिंदी, sorry, neither. Tell me how I can write it in symbolic form. He will given me the probability of passing English and Hindi is 0.5 and now he is giving me the probability of passing neither, यानी दोनों ही पास नहीं हो रहे. उसकी probability क्या दी हुई है? 1 minus P of E intersection, sorry, E union H. Okay, बढ़िया बात है बच्चे, चेक कीजिए what is given here. So E complement intersection F complement. देखो, देखो बच्चे, इसका मतलब होता है आइदर यू विल पास द फर्स्ट पेपर और यू विल पास द नेक्स्ट पेपर. मतलब या तो आप इसको पास कर रहे हो या इसको पास कर रहे हो या आप दोनों को पास कर रहे हो. ही विल से नाइदर. ओके, हाँ जी. एनीबडी एल्स? अभी मेरे पास एक आंसर आया था. कैन एनीबडी वांट टू रिस्पॉन्ड दिस वन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? So E complement intersection H complement. E complement इंटरसेक्शन H complement. और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1 minus E union H. Got it? तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. बिल्कुल, इट इज गिवन टू यू कि ये आपके पास क्या है, 0.1 है, इनडायरेक्ट वे. ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection H. From here you are getting probability of E union H. Now I come to the next point. If the probability of passing the English, अब आपको दिया गया बच्चे कि probability of passing the English is 0.5. Now he said find the probability of Hindi. I think it's the simple question. E union H, PE, this is the way we can solve it.
हो जाएगा बच्चे? Got my point? What I want to say? चलिए, वेरी गुड. इसी में से आगे चल रहे हैं बच्चे हम क्वेश्चंस में. That is also very good question. And if you see the sample paper which I have already sent to you, you will find this question. He said, in a class of 60, that means to say total student there are 60. Now the student opting NCC are 30. Student opting NSS is 32. And the student opting NCC and NSS, both, they are 24. Now, if we select it, let this be the event A, this be the event B, and this be the event A intersection B. Now, if I write this one as probability, so I can say 30 by 60, 1 by 2. 32 by 60. चलिए इसको बाद में करेंगे, simplify. And if I talk about A intersection B, so it is 24 by 60. Okay, now what he is asking, find the probability that the student opted NCC or NSS. That means हम किस चीज की बात कर रहे हैं? Find the probability that student opting NCC or NSS. I think यही होगा ना? Okay, and in next question he said the student has opted neither NCC nor NCSS. तो इसका मतलब हम किस चीज की वैल्यू करेंगे बच्चे? And in the next sense I can write it as and the last question is given to me, the student has opted NSS but not NCC. That means he is asking me to find out the probability of A difference B, which I can simply say like this. So isn't it B difference? NSS, sorry, NSS minus this. Here is, he is asking me NSS, not this one. Okay. Now we want to find out the probability of this one. So this can be written as PB ठीक, हमने टोटल में से चेकआउट कीजिए. वैसे फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी we have deleted the probability of A intersection. So this is the way we can solve it. Okay, so this is the simple answer of this question. Got my point? कोई बात नहीं बच्चे, अगर उसने कहा एक्चुअली ना इन क्वेश्चन ही सेड NSS not NCC,
That's why we are writing it as B difference A. But if he say NCC but not NSS, then we can write it as A difference B. तो हम इस तरह से भी उसमें क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे. तो these are the questions which are based upon these formulas. अब एक और देखिएगा, same kind of question will exhibit in your next exercise. He said probability of A is 0.54. Probability of B is 0.69. Probability of A intersection B is 0.35. मैं आपकी हेल्प लूंगा, आप में से कौन मेरी हेल्प करना चाहता है इस क्वेश्चन में? I want to find out these four answers. Probability of A union B, probability of this one, probability of this one, and probability of this one. हाँ जी, how we will start this question? So P A union B can be found by using the formula. Using the formula, we know that very well. P A union B can be found out by our simple formula, जिसको हम अभी number of ways में repeat कर चुके हैं. Simple. Okay, now if we will deal with this question, so I can write it as, So using De Morgan's law or Yes. 1 minus A union B. yes, we can simply say P A union B. That is also a simple, because we have already found out P A union B. बच्चे मैं calculation नहीं कर रहा, I think you know that very well. Now come on to this one. ये भी हमारे पास सेट में एक फार्मूला था बच्चे, which can be written as P A difference P, and we can simply write it as in terms of our scenario. I think बहुत easily हम इसको क्या कर सकते हैं, simplify कर सकते हैं. Now if I come to the next level, so I can write it as PB first, second, third, and fourth. 1, 2, 3, 4. This is the way we can represent it. हो जाएगा? This is the way we can solve that kind of question. अब देखिए, इन्हीं questions को मैं statement में से और ले रहा हूँ. He said, a company has 5 employees: Harish, Rohan, Sheetal, Alice, and Salim. Harish is male, Rohan is male, Sheetal is female, Alice female, and Salim is male. And their ages are 30, 33, 46, 21, and 41. This is given to me in my question. If you see it in question number 8 of your miscellaneous exercise. And he is asking me, a person is selected at random from a group to act as a spokesperson. What is the probability that the spokesperson will be, please listen it, will be either a male or
over 35%. या तो मेल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ओवर 30%। एज क्या होनी चाहिए, 35 से अब होनी चाहिए। तो बच्चे हम इसको सपोज करेंगे कि लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट अ इवेंट, व्हाट आर द मेल्स। तो अगर आप मेल की बात करेंगे तो इट इज हरीश, रोहन and Salim. Now the second event is age 35, over 35। तो over 35 में तो बच्चे you can see शीतल and Salim. Now when you find in terms of event what is common, so there is only one candidate which is common, Salim. Now you can utilize this question in our scenario. We want to find the value of P age union B. तो P A union B can be written as, देखिए ध्यान से, हमने यही फाइंड आउट करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, 1 2 3। तो वी कैन सिंपली से 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी बच्चे 2/5, बिकॉज टोटल पर्सन आर 5, एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। तो अल्टीमेटली वी कैन से 4/5। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यानी हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट किया है, इवेंट्स में कंप्लीट किया है, और उन इवेंट्स को आगे क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है कि ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, चेक इट एंड यू विल सी out of 100 students, okay, you want to make two section, one is of 40 students and another is of 60 students, ठीक। and he is asking me if you and your friend, फिर से सुन लीजिए, you and your friend are among the 100 student, what is the probability that you both enter in the same section। बच्चे हमने क्या करना है कि एक दो सेक्शन बनाने हैं, तो उसमें से दो कैंडिडेट हैं, या तो वो दोनों एक सेक्शन में होने चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो डिफरेंट सेक्शंस में होने चाहिए। तो इट्स अप टू यू, आइदर आप 100 में से 40 वाला सेक्शन बनाना चाहते हैं या 100 में से 60 वाला सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमने 100 में से 40 स्टूडेंट सिलेक्शन करने हैं, तो दिस इज माय आंसर। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन? यू आर सेलेक्टिंग 40 स्टूडेंट फ्रॉम 100, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट ये हो। अब देखिए बच्चे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, हमने क्या कर लिया, इन 100 स्टूडेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 98 + 2। चेक कीजिएगा, 98 + 2 मीन्स टू से कि मैंने ये दोनों के दोनों स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए इस 40 वाले, तो दैट मीन्स टू से मेरे को 98 में से जस्ट कितने स्टूडेंट सेलेक्ट कर, 38।
बट एक केस ये भी हो सकता है बच्चे, जिसको मैं इन टर्म्स ऑफ प्लस लिखूंगा, कि मैं इन दोनों स्टूडेंट को सिलेक्ट ही ना करूं, तो मैंने इन 2 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो दैट मींस मैंने 98 में से टोटल कितने सिलेक्ट कर लिए? 40। लिसन दिस क्वेश्चन केयरफुली। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चे कि इसका मतलब इस वाले इवेंट में वो 40 वाले सेक्शन में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो 40 वाले सेक्शन में नहीं है, दूसरे में सेक्शन में चले गए, एंड आवर पर्पस सर्व्ड हियर कि दे बोथ बिलोंग्स टू द सेम सेक्शन। गॉट इट? और अब आपसे वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे क्वेश्चन में, अच्छा यू कैन डू दिस क्वेश्चन, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, कि सपोज कीजिए वी विल कलेक्ट 60 स्टूडेंट, तो 100 सी क्या हो गया? 60। तो व्हाट वी कैन से, फिर से वही कि आप 2 के 2 सिलेक्ट कर दीजिए और 98 में से जस्ट कितने सिलेक्ट कीजिए? 58। नेक्स्ट वन क्या होगा? 2 में से आप किसी को मत सिलेक्ट कीजिए और 98 में से कितने सिलेक्ट कर लीजिए? 60। गॉट माय पॉइंट? तो ये भी आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है। Either in the first case or in the second case when we are solving this case. ओके, तो प्रोबेबिलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस फॉर्मेशन में लेते हैं। अब जैसे इसने एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा, फिर से एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। न्यूमेरिकली ये क्वेश्चन इसी तरह से ट्रीट होंगे बच्चे। एंड वन क्वेश्चन ही इज आस्किंग मी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द हैंड ऑफ 7 कार्ड्स, आई थिंक आप सबने कार्ड्स देखे होंगे, वी वांट टू select 7 cards and total cards in playing cards is 52, and he is asking me find the probability of all kings. तो आई थिंक आप सबको पता है बच्चे कि आपने 52 में से 7 कार्ड पिकअप करने, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 52C। अब उसने कहा कि ऑल किंग्स, इफ यू सी आपके पास 4 किंग होते एंड 48 दूसरे कार्ड होते, तो आपने टोटल 4 किंग्स सेलेक्ट किए, रिमेनिंग 3 कार्ड्स आर देयर, तो आप 48 में से कोई भी 3 कार्ड्स ले लीजिए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग्स। अब माय सेकंड क्वेश्चन इज, ही सेड ओनली 3 किंग्स। अब क्वेश्चन क्या होगा? 4C3, एंड अब आप 48 में से 4 कार्ड ले लें, बट रिमेनिंग क्वांटिटी विल बी द सेम। सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट होगा। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन ही सेड एटलीस्ट 3। प्लीज इसको चेक कीजिएगा, व्हाट ही इज सेइंग, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 मींस टू से, पहले तो नीचे तो वही आएगा, (4C3) and 48C4. Next question, 4C4. Check my point. In this case हमने कितने कार्ड लिए हैं? 3, and in this card हमने कितने लिए? 4.
but here 4 cards है. देखिए 3 kings are there, 4 other cards. Now we take 4 kings, at least कहा था maximum कितने हो सकते हैं, and 3 other cards. तो these are the 2 options to select these cards. तो ये favorable हो गए. Upon वो तो आपके पास है ही है 2 cards. And this is the way we can deal with the questions of probability. बच्चे ये मैंने आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज और सिंपल एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस थे सॉल्व किए. एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल डील विद सम गुड क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी के क्या होंगे, अलावा होंगे, बट बेसिकली रिलेटेड टू योर फार्मूला. तो आई कैन से मैंने एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन कंप्लीट किए एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डील विद some more questions of this kind. Okay.